Should we start? Can I please have everyone's attention, please? The session is about to start, and I will request all of you to please take a seat. Audience at the back, सबैजनालाई सिटमा बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। शान्त भएर यहाँ सेसन सुरु भइरहेको छ। कृपया सिटमा बसिदिनु होला शान्त भएर। Okay. The hall looks more like a chaos. So we are combining two sessions together. We are talking about South Asian literature and at the same time, literature without boundaries. सीमा से परे साहित्य. So it's always very difficult to Can we please request you to take your conversations outside? If you're interested in listening to the session, then please be seated and listen to the panel here. Otherwise, I would request you all to move out. It's really disturbing for the panel here. We can't hear ourselves. Thank you, Millie. The friends, when we are talking about literature, and that too after a Bollywood session, when the biggest stars, so the great stars are gone. So now you have to listen, you have to bear with the writers. And when we talk about writing or literature, we always believe in a world without any border, without any frontier. No writer ever says that I write for a particular community. I write for a particular geographical boundary. So always literature is about human being, about the earth. Starting from the Vedic time up to this, every writer has a dream to reach every man of the world, every human being of the world. So in that context, when we discuss about Asian literature, the question arises, do we really know the Asian literature? Is there anything called Asian literature at all? Even when we talk about Indian literature or South Asian literature, do we really know each other very well? It's a very it's an ironic situation on the dais. You can see all four are Hindi writers and I'm an Odia writers. So one is a publisher, but Abdesh ji, Bandana ji, Yatish ji, तीनों हिंदी के लेखक हैं. I'm a Odia writer. Millie is a publisher in English. So do we really have an interaction? Do we have any platform where we can have a dialogue with Nepali? Where do we have any platform where we can interact with each other? The Bengali and Tamil, the Tamil and Sinhalese, the Sinhalese and Nepalese, the Urdu and Punjabi. We are close to each other. But hardly we know very few Pakistani writers. We don't know who are writing in Afghanistan. What is happening in Indonesia? So all those questions and our esteemed panel, let me start with Bandana ji. Do you really believe there is an identity called Asian literature? Though we started with Gurudev Rabindranath Tagore, he talked about Asian identity, Asian literature, Asian sensibility. But still, the geopolitical enmity played a vital role to divide us. In that context, do you believe we writers
can play a role to bring the literary traditions of the region together? Thank you. I do firmly believe that writers have a big role to play in this context. Politicians may do whatever they want to do, but the written word travels across boundaries. उसके लिए सचमुच कोई सीमा नहीं होती है. और इसके एशियन ट्रेडिशंस, कल्चरल ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेडिशंस बहुत सारे सिमिलैरिटीज लिए हुए होते हैं. तो उनमें एक तरह की एका होती है. मतलब बहुत सारी चीजों में हम ज्योग्राफिकल वेरिएंट्स हो सकते हैं, उसमें प्रैक्टिसिंग कल्चर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन रूट कल्चर्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. और इसीलिए इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए ऐसे मतलब सारे लेखक जो इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं वो ले जा सकते हैं. वो ले जा सकते हैं दो तरह से. इस तरह नहीं जैसे कॉलोनियलिस्ट पावर्स ने सोचा कि उसको डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड बना दिया और उसको ओरिएंटल एक थिंकिंग थॉट प्रोसेस की तरह सोचा कि ओके दे आर सम एक्सोटिक स्पीशीज who need to be discovered, trained, etc., etc. Not that way, but at par with good literature. We can go to the West as well as share literature amongst ourselves, because human responses, human emotions across boundaries continue to remain the same. But how, the way, there are many boundaries. The biggest boundary is the languages. We can say that the languages are our greatest strength. The diversity is a strength, but at the same time, the diversities are also problematic. They can create borders, they can create hindrances. So what I feel is, Abhi, in your opening statement, you said we need platforms. साझा प्लेटफॉर्म्स चाहिए हमें. सिर्फ जो इंडियन डाइवर्सिटी है उसके ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि जो एशियन ट्रेडिशंस है उनको पकड़ने के लिए और उसको बाहर पहुंचाने के लिए भी इंटर डायलॉग्स जिसको बोल सकते हैं वो हमें क्रिएट करने होंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स. तो लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू come here today, jahan par I can talk to you, I met you, and then we discuss certain things, not on this platform, but otherwise we get to meet each other and realize, okay, we have so many similarities and we need to express them, bring them forward and take it to the world. This is what I feel. Okay, thank you, Madanaji. Now I'm going to Avdeshji. Sir, two things actually. As a Odia writer, I always ask myself one question. In Odisha, every fourth Odia is a tribal. And we have almost 10 million tribal people there. And they have 64 kind of languages. And we completely ignore what they are writing, how they express themselves. And it happens to the pan-Indian scenario also. We talk about the mainstream languages, the official languages, but completely forget the other languages which is not officially recognized. वो हिंदी में भी शायद होगा, जैसे कि हिंदी का जो काफी आयाम है, जो उसकी जो वेराइटीज है, उसमें भी काफी बातें लिखी गई होंगी. So how we bring together all those great traditions, all the great expressions? मैं समझता हूं कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता, ये सौंदर्य का आधार है. अगर विविधता नहीं रही तो एकता की चाहत में साहित्य नहीं रहेगा. संगीत और मैथमेटिक्स, कलाओं में संगीत है जो मैथमेटिक्स के पास है. गणित की भाषा सारी दुनिया में एक है, लेकिन गणित कभी भी साहित्य का विकल्प नहीं हो सकता.
और जो साहित्य है उसका माध्यम जो भाषा है उसकी खूबसूरती उसके बोलने वालों में है। हिंदी में बड़ी बड़ी 49 49 बोलियां हैं। उन 49 बोलियों की भी 5-5 6-6 जिलों में अलग अलग उनकी लय है, बोलने का ढंग है। ये हमारी खूबसूरती है। हिंदी इतने तरह से बोली जाती है और सिनेमा में अलग अलग पात्रों के द्वारा उसका एक हास्यास्पद रूप भी, बम्बैया हिंदी कैसी है, कलकतिया हिंदी कैसी है, मद्रासी एक खास ढंग से बोलता है, बिहारी का मजाक उड़ाया जाता है। ये सब अलग अलग शैलियां, अंग्रेजी में 20 शैलियां हैं। किसी जमाने में किंग्स इंग्लिश रही होगी, अमेरिकन इंग्लिश का मजाक उड़ाया जाता था, अंग्रेजी में 50 शैलियां हैं। हर भाषा में ऐसा है और भाषा एक हमारा अनिवार्य माध्यम है। और वेद में वाक और मन का अनिवार्य संबंध है। जैसा कि वंदना जी ने कहा कि इमोशंस, भाव ही केंद्र में है। और चूंकि मनुष्य मात्र के भीतर हृदय है, हृदय की भाषा भाव है और सारे मनुष्यों में यह भाव है, इसलिए मैं अगर भोजपुरी में भी एक गीत गाता हूं तो उसका भाव अनुवाद में आकर दूसरी जगह के लोग भी समझ लेते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जो गीत काव्य है मूना मदन, हमने पढ़ते समय बचपन में सुना, बनारस में सुना। लेकिन मूना मदन को परदेश में व्यापार करने से, जाने से रोक रही है। क्यों जाते हो परदेश छोड़ करके? हम मुझको एक पंक्ति अब तक याद है और उसकी लय, सागर सुसन खाए को बेसी आनंद भनले। अरे साग रोटी खा के ही मौज करो न घर में, लेकिन जब वह लौट के आता है परदेश से अपार धन कमा के लौटता है तो मां भी नहीं और मूना भी नहीं, सब चला गया, केवल धन। ये कालिदास कहता है, ये वाल्मीकि कहता है। जो क्लासिक बोलता है वो हमारी बोलियों का छोटा छोटा काव्य भी बोलता है, हमारे गीत भी वही बोलते हैं। हर काव्य में सोने की अंगूठी, सोना एक खास प्रतीक बन के आता है, मोटिफ बन के आता है। तो एक ओर सोना है और दूसरी ओर दिल है। तो ये जो प्रेम है, एक कोरोना ने बता दिया कि प्रेम रहेगा तो सब कुछ रहेगा, वरना सारी दौलत होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। तो हमारी जो भाषा है, अनेक जितनी भाषाएं हैं और इनकी जो डाइवर्सिटी है, तो मैं समझता हूं कि हमारी जड़ें हमारी भाषा में और भाषा के बोलने वालों में और बोलने वालों के प्रदेश में, उस प्रदेश की मिट्टी में, वहां से उगने वाले फूलों में, वनस्पतियों में, वहां की हवाओं में, नदियों में, झरनों में, सब में है। तो ये विविधता होनी ही होनी चाहिए। रविंद्रनाथ ने स्वयं गीतांजलि का अनुवाद किया, लेकिन आप उसका अनुवाद पढ़िए, बंगला मूल के सामने वह अनुवाद 2 कौड़ी का है। रविंद्रनाथ ने हर तरह से कोशिश की कि उसमें वो संगीत पैदा कर सके। कविता का पहला गुण है संगीत। धगत धगत विनिर्गमत करालभाल हव्यवाट दिमित दिमित दुमित ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अब किसी को बताना नहीं है कि शिव तांडव कर रहे हैं। ये कविता की कोली ध्वनि, कोई डिक्शनरी आपको उठाने की जरूरत नहीं है। तो पहला जादू का कार्डवेल कहता है कि पहला जादू उसके छंद का है, उसके शब्द का है, साउंड का है। और रविंद्रनाथ अनुवाद के जरिए अंग्रेजी में वो कभी नहीं ला सकते थे। लेकिन गीतांजलि का वह भाव, ये जरा पाउंड को जब वह पांडुलिपि मिली तो एकदम सन्नाटा खा गया। का पूरे पश्चिमी काव्य में कहीं इतनी शांति नहीं, कहीं इतनी करुणा नहीं, इतनी अशांत दुनिया में इतनी शांति की कविता। तो अब वो लंबी कहानी हो जाएगी कि फिर रविंद्रनाथ को बताया गया कि ये ईसाइयन
कलकत्ता में जो ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है उसकी वजह से प्रभाव पड़ा होगा। फिर रविंद्रनाथ ने उसका खंडन करने के लिए 100 पोएम्स ऑफ कबीर का अनुवाद किया। नहीं, हमारे 600 वर्ष पहले भी ऐसे लोग हो चुके हैं। हमारी जड़ें वहां हैं। तो एजरा पाउंड ने स्वयं चीनी कविता से बाद में बहुत प्रभाव लिया। तो मूल प्रश्न यह है कि जो एकता है यह कोई बहुत बड़ा स्वप्न नहीं है, और अगर बड़ा स्वप्न है तो यह विविधता के साथ होनी चाहिए। मैं रविंद्रनाथ के एक प्रतीक के जरिए अपनी बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी ये 5 उंगलियां हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन जब प्रणामांजलि होती है या पुष्पांजलि होती है तो ये सारी उंगलियां मिलके ही प्रणामांजलि बनती है या पुष्पांजलि बनती है। हमारे भारत में भी अधिकारी लोग जब बैठते हैं तो कहते हैं यहाँ इतनी अधिक भाषाएं हैं, यह देश एक कैसे हो सकता है। इसको बाधा के रूप में लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। अगर नेपाल में इतनी जनजातियां हैं तो इन जनजातियों ने ही इतनी भाषाएं, इतने गीत रचे हैं, नेपाल को इतना खूबसूरत बनाया है। हमारे देश में इतनी जनजातियां हैं, तो ये मैं समझता हूं ये खूबसूरती है। और वेद के समय में ही लोगों ने इस विविधता और एकता के भाव को पकड़ लिया। वेद में जहां भी एक शब्द आएगा उसके आगे पीछे आपको बहु शब्द जरूर मिल जाएगा। आधुनिक युग में इसको रविंद्रनाथ ने हमेशा पकड़ा, बार बार पकड़ा। इसीलिए किसी भी देश में अगर यह एकता की बात उठती है, साहित्य के लिए भी अगर उठती है, तो भी हमें विविधता के पक्ष में एकदम खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें विविधता में है। हमारी लय वहां है, हमारा छंद वहां है, हमारी भाषा वहां है। अनेक ऐसे शब्द हैं जो इतने अनिवार्य हैं जो किसी दूसरी भाषा में नहीं हो सकते। मैं हिंदी का लेखक हूं, लेकिन मेरी भोजपुरी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद हिंदी में कभी नहीं हो सकता, संस्कृत में नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और इसमें एक बड़ी सीमाएं भी है। एक तो है कि ये ट्रांसलेटेबल नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रांसलेटेबल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि काफी सारी उड़िया शब्द हैं जिसको आप अनुवाद कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। एंड जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, एजरा पाउंड गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम चाइनीज पोइट्री, और वी नो दैट how 4 quatrains was written and how Eliot was influenced by Gita and others. That's one side. But you know, every time when we are sitting in a literary discourse, we talk about Ezra Pound or Neruda or Westland or that. You know, I cannot quote somebody from Indonesia. I cannot quote somebody from Vietnam. I cannot quote somebody from Cambodia. That's my concern is that. So I will go to Millie in the, being a publisher and being publisher from a very leading house. How do you see that? Actually, Well, I think all my panelists have brought forward very interesting points. And I think one of the main things that, I also agree with is that, emotion is one, but expressions might be different, languages might be different. Because Asia is a very big continent, they're very different. So many languages inside India, forget about other countries around us, just in the subcontinent. But I think as far as Penguin is concerned, Penguin Random House India, where I work, we publish books from writers very actively, especially in the subcontinent. So we have a lot of writers from Pakistan, we have people from Sri Lanka, we have Nepalese authors, people living here, and that is why I'm here. So I think at some level, stories, emotions do connect. So that is one aspect. I think we all connect with a story, and now with translations, even with languages that we don't read or understand, I think it becomes accessible. I know that everything cannot be translated, like you said, but at least the crux of it, people understand. And if
if you have a good translator, then probably 70 to 80%, of it can be as close to the, original text. So I think all these are advantages now. And you've seen that in terms of international recognition also. Booker also has been now consistently being won for translated works, whether it is from India in Hindi or, Tamil or, Vietnamese language. So people, or Korean. So I think there is this crossing of boundaries or borders. I don't think this physical boundaries really apply when it comes to literature and stories and art. You can appreciate it and people want to do that. What we need to do, I think, in terms of publishers, where I belong, is that we make these works available, widely available, and we are open to, this dialogue through books and through writing. So I think that I see is a very important. And personally, as a reader, I find it very interesting because, we grew up reading certain writers, mostly Western writers, and, we heard some names here. But there is so much more within our country in various languages to learn, to talk about, because conversations like these, conversations in classrooms, drawing rooms, I think that is what create awareness. And you hear about a particular writer, that you get curious, you pick up the book. It might not always be a big name or a Nobel laureate, but the discovery for writers also, I think, happens through conversations and where people read it and talk about it. So I think that is very, very important for all of us, for writers and publishers. And I think we should do it more often and, in a more active way going forward. Okay. So, Yatish, before, when we are talking about, ek to hai ki we are talking about the limitations. There is a limitation of non-translatability. We cannot, there is a border, and that is 2P. But there is a sharing ideas, sharing cultural values, what Bandana ji was talking about. And in that context, I remember I found a little bit of light of again on Shakti Chattopadhyay, or Shakti Chattopadhyay's influence on Jayanta Mahapatra, or Jayanta Mahapatra's influence on some other poets, some Assamese or Northeastern poets. So, there is a common sharing every time. And that happens in our fiction also. So, as a young poet, as a young writer, do you see that we are crossing that limit? We are trying to surpass that frontiers. Thank you. Namaste, Kathmandu. Or I'll remember Gopal Prasad Rimal first, because he belongs to Kathmandu, before saying anything. Before narrating anything, I would like to quote one example that एक बार इरफान जो इंटरव्यूअर हैं, फेमस इंटरव्यूअर हैं, he was narrating it, कि उनके पास 5000x जूम का कैमरा था और वो गलती से 5000x जूम पे चला गया, और जो स्किन है हमारी, उसका जो रोम है, वो रोम इतना एक्सपैंड दिखने लगा कि वो ब्रह्मांड में बदल गया. ठीक है, फिर उसी को डीफोकस करके उन्होंने ब्रह्मांड पे 5000x ले गए कैमरा. सो इट्स ऑल व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपका परिप्रेक्ष्य क्या है, आपका चश्मा कौन सा, आप किस चश्मे से इसको देखना चाह रहे हैं, और आप क्या बालकनी व्यू रख रहे हैं कि आप सड़क से देख रहे हैं. आप बालकनी से देखिएगा तो पूरा सड़क की हर मोड़ दिखेगी आपको, सड़क से दिखेगा तो सिर्फ सड़क दिखेगा. सो आज का जमाना जो है वो नमक खाना का है, आज का जमाना जो है वो गीतांजलि श्री का है, आज का जमाना पेंगुइन जो काम कर रहा है उसका है. हम अगर नेपाल, भारत, बांग्लादेश को छोड़ कर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 122 वोकल लैंग्वेज, 1599 क्षेत्रीय भाषाएं, हम किस विविधता की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर एक छाया है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है. इसलिए बांग्ला और हिंदी में इतना सम्मिश्रण है. बांग्ला हिंदी को गले लगाती है, इसलिए पहली पत्रिका वहां से निकलती है, कलकत्ता से. पहला MA कलकत्ता से आता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बिहार से हो रही है, या मराठा के पास हम जाएं तो बहुत सारा चीज पहली बार वहां हो रहा है. तीसरी चीज, तो इसी टॉपिक पे कल मैंने आपसे
अपनी बात रखी थी कि हम लोगों को ऑब्जर्व करना है समय कैसे बदल रहा है, समय की करवट कैसी है। फैज से लेकर, मंटो से लेकर, इसमें चुगताई से लेकर आज का पाकिस्तान कैसे बदल रहा है। हम गोपाल प्रसाद रिमल को इसलिए याद मैंने शुरुआत में किया कि उन्होंने कैसे छंद से अपने आप को जुदा किया, कैसे नई क्रांति लाई, मुक्तिबोध कैसे लेकर के आए नई चीज, और हम एक दूसरे से सीख रहे थे। अगर आप टाइम फ्रेम में 100 साल को बांट दें तो उस 100 साल में पूरा का पूरा साहित्य जो है वो समान रूप से करवट ले रहा है, पूरे एशिया, साउथ एशिया, सब जगह कह लीजिए। हाँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी आपने ही कहा कि जरूरी है हमको एक दूसरे से सीखना, और इस सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संवाद का होना, और उस संवाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे अच्छे ट्रांसलेटर्स का होना। क्योंकि विविधता में जितनी भी चीजें हों, या जितना भी अवधेश प्रधान सर ने कहा कि हाँ हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे डिफर होकर इन्हीं की बात को दूसरे शब्द में कहना चाहूंगा कि हर एक संवेदना का एक ही शब्द होता है, और हर लैंग्वेज में वो संवेदना वही संवेदना कहलाएगी, उसके शब्द बदल जाएंगे, माने वही रहेगा। तो जरूरी है उन सारे मानों को एक सिंक्रोनाइजेशन में लाना, और उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स का बार बार आना बहुत जरूरी है। और हम जरूरी है कि कल हम इंडोनेशिया में बैठ के ये बात करें, परसों हम श्रीलंका में बात करें, तो शायद ये बात और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच सकेगी। हाँ, तो एक तो मेरे पास एक चिट्ठी आ गई है कि इसको वाइंड अप करें, तो वी आर गोइंग टू वाइंड इट ऑफ। बहुत ज्यादा बोलने का है भी नहीं। I believe, when you are talking about literature, it's not about talking, rather doing. And in that doing, how you approach your own people, how you approach your own uh, periphery, your own neighbors. I remember long ago when I was a college student, I read a poem by a poet called Bimal Nibha. And that time I had no idea what Nepali is and what is written. I was awestruck with that poem actually. And that poem is still with me. I love that poem. I translated it, and until now I don't know who Bimal Nibha is. Only I know that he is a Nepali poet. He writes in Nepalese, and it was published in Indian literature. So, ऐसे सैकड़ों कविताएं हैं, पुस्तकें हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है. सो ओनली व्हाट वी नीड टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म टू हैव डायलॉग. तो एक जो जियोपॉलिटिकल डिवाइड है उसका शिकार हम कहीं ना कहीं बन जाते हैं. जैसे कि मंटो चुगताई की बातें तो होती है, इंतजार हुसैन जी की बात होती रहती है, लेकिन हु इज द कंटेम्पररी पाकिस्तानी पोएट, उसके बारे में बोलने में भी थोड़ा संकोच होता है, डर लगता है, बोलूं या ना बोलूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं तो फिर उसके बारे में बोलूं कि ना बोलूं. ये जो सीमाएं हैं ये एक बड़ी रियलिटी भी है, उसको हम नकार नहीं सकते. तो द ओनली थिंग इज to surpass these frontiers, and writers are to write for the humanity. That's I wanted to say. And thank you all for this wonderful small session. But I think thank you very much for being so pleasant and so peacefully listening to us. Thank you very much. Thank you so much. We have got lots of insight on the theme of literature without boundaries, South Asian literature and emerging trend. And I would like to call upon the stage Dhirendra Premarsi Dai, literary figure Dhirendra Premarsi Jiu, for the facilitation and giving them token of love to all our distinguished guests. Volunteer, please. Okay.
Thank you all our distinguished panelists. You have given wonderful session, and thank you so much, Dhirendra Premasidai, and we